Once again, good morning, students. Now, as we know that the cell is comprises of three main parts, that is plasma membrane, cytoplasm and nucleus. But when we talk about plant cell, there is one more additional part, that is cell wall. So, a little bit introduction of cell wall is also required here. So, cell wall is present in plant cells, in some bacteria and also in fungi. This is the non-living part of the cell. It is rigid and permeable. Now rigid, you know, that is hard, and permeable means it allows all the substances to pass through it. And when we talk about composition, it is made up of cellulose in plants. अब cellulose क्या होता है? Cellulose is a type of carbohydrate which is made up of a long chain of glucose molecules. यानी काफ़ी सारे glucose molecules जब एक लंबी चेन के रूप में फॉर्म होते हैं तब cellulose नाम का एक कार्बोहाइड्रेट बनता है, और यही कार्बोहाइड्रेट सेल वॉल्स को फॉर्म करता है इन प्लांट्स. And the cell walls of two adjacent cells remain connected through the small pores, and these pores help in the exchange of materials between cells. Now, when we talk about functions, the main function of the cell wall is that it gives a definite shape to the cell. Secondly, it gives mechanical strength to the cell and protect it from injury or damage, क्योंकि outermost covering बना देती है plants में, तो किसी भी पैरासिटिक अटैक या दूसरे मैकेनिकल इंजरी से बचाती है प्लांट्स को. Thirdly, it helps the aerial parts of the plant body to withstand gravitational force. Means जो aerial parts होते हैं वो gravitational force के against grow करते हैं, तो उसमें भी ये उनको means strength provide करती है. Now next function is that it protects the cell from osmotic bursting. Osmotic bursting means it controls the amount of endosmosis. Suppose cell को किसी भी बहुत डाइल्यूट मीन्स बहुत पतले हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो क्या होगा कि वाटर दैट फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन यानी कि बाहर से सेल के अंदर एंटर करने लगेगा और सेल स्वेल कर जाएगी. और स्वेल करने पे क्या होगा कि सेल कंटेंट्स विल एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सेल वॉल. तो ये सेल वॉल उस समय अंदर की तरफ प्रेशर डालती है ताकि दोनों तरफ इनवर्ड प्रेशर और आउटवर्ड प्रेशर बराबर रहे और सेल बर्स्ट ना हो. Now we will discuss about one more process which is given on page number 61 in NCERT book in the second paragraph of cell wall. Is plasmolysis. When a plant cell is kept in hypertonic solution, hypertonic means उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वाटर कंसंट्रेशन सेल के अंदर के कंसंट्रेशन से कम है, तो सेल से पानी बाहर की ओर निकलने लगता है, यानी एक्सोस्मोसिस टेक्स प्लेस. एज अ रिजल्ट द सेल श्रिंक्स. सेल श्रिंक करते इट मीन्स लेटर ऑन सेल साइटोप्लाज्म एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो श्रिंक्स, एंड दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट सेपरेटिंग अवे फ्रॉम सेल वॉल फ्रॉम द कॉर्नर्स, एंड फाइनली क्या होता है कि most of the plasma membrane gets separated from cell wall due to this shrinkage, and this process is known as plasmolysis.